हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल में होंगे, बहुत ही ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बहुत ही ठीक हूँ और मेरा नाम है संजुली भारद्वाज। तो गाइस आज मैं आप सभी को इतना बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को पसंद की है। तो उसके लिए मैं बहुत ही सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो आप सभी का बहुत ही सच में दिल से मैं आपको सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो आपने मुझे इतना सारा प्यार और इतनी जल्दी मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। तो आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना, मेरी वीडियोस को ज़रूर जाकर देखना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो का आज टाइटल है वो कोई ब्रांड है। तो ऐसी वीडियोज़ मैं काफ़ी ला चुकी हूँ, जहाँ पर मतलब कि जैसे स्मार्टफोन वगैरह बनते हैं और बहुत सी ऐसी वीडियो थी। तो आज भी कुछ H&M ब्रांड करके कुछ बांग्लादेश है। तो इस वीडियो में मतलब ये दिखाया जाएगा कि फैक्ट्री जो है वो तो मतलब कहते हैं बहुत ही अच्छी वहाँ पर बांग्लादेश में है, जो बहुत ही बेस्ट जो क्लोथ्स हैं तो मिल रहे हैं, मतलब बनते हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है और काफ़ी, तो इस वीडियो में और भी जो भी नॉलेज होगा इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो आप मेरे साथ ज़रूर एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में ही बेल आइकन का निशान है, उसे प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट। H&M wants to make a positive contribution to the world. As a long-term buyer in the textile industry and seller in many markets, H&M contributes to international trade. Trade is particularly important for developing countries to take part in, as the jobs, growth and development it brings help lift people out of poverty. The textile industry is, according to the United Nations Development Programme, an industry well suited to create such progress. Textile is one of the key economic sectors for us in Bangladesh because it brings almost 80% of our foreign currency and employs more than 4 million people. H&M has been a great partner for us in our initiatives towards sustainability and growth. The majority of the people working in the textile industry in Bangladesh today are women. UN Women states that promoting women's access to economic opportunities contributes to gender equality. 5.5 বছর ধরে এখানে কাজ করছি। আমি যখন গ্রামের বাড়িতে আসছি তখন আমি গরিব ছিলাম, এখানে হেল্পার হিসাবে ঢুকছি, পরে প্রমোশন পেয়ে অপারেটর হিসাবে বেতন পাচ্ছি। পরে আমার এই যে সুন্দর আরো আমার জীবন পাল্টে গেল। আমার ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়ালেখা করাচ্ছি আর আমার ছেলে চাই সে ডাক্তার হবে। This has an impact on overall labour productivity in the economy and on children's health and well-being within the family, and hence the well-being of the next generation. H&M doesn't own any factories but works with independent suppliers who all have to meet H&M's sustainability commitment and code of ethics. In 2015, we did over 3,500 audits and assessments in our suppliers' factories. All 265 manufacturing factories in Bangladesh producing for us has undergone the Accord, building and safety inspections. H&M also provide training on workers' rights to worker and management. 80% of all our suppliers' factories in Bangladesh have so far participated. Moreover, H&M helps suppliers establish democratically elected workplace committees and improve the dialogue between management and employees. We want to contribute to improvements for the people working in the clothing industry in Bangladesh, and that's why since many years back we have invested a lot of resources to improve the Bangladeshi textile industry. And to take responsibility is a very important part in the total customer offering for us. When it comes to the workers' wages, our standpoint is clear, and that is that we support the workers' demand for higher wages.
And during my visit now to Bangladesh, I met with the Prime Minister, Sheikh Hasina, and where we put forward our demand for higher minimum wages and an annual review of the minimum salary. H&M is also working to ensure that its own purchasing practices enable suppliers to meet H&M's sustainability standards. For example, by striving to provide long-term business relation, reasonable lead times, fair pricing, timely payments, and transparent communication. H&M works for fair living wages, being paid by all suppliers across the entire textile industry. H&M is the first fashion company to have developed a global strategy for a fair living wage, being paid by all our commercial goods supplier. One important part of the strategy is implementing a fair wage method, which was first piloted in a small number of selected suppliers' factories. The result was positive, and the method is now scaled up to a bigger amount of strategic suppliers' factories in several of our sourcing market. Skills development is key for workers to increase their wages. Providing skills training is part of the work to strengthen workers and help develop the textile industry. H&M started its training center in 1999 to train the helpers and fresh people and to make sure that they get skills and work as operators in the factory. The way I see H&M, they're committed to continue this. H&M has been a great strategic partner supporting us in all the positive initiatives. And not only in Bangladesh, H&M also partnered with us in our work in Vietnam and Cambodia in our Better Work program. H&M welcomes more partnerships and is hopeful that by joining forces, it can contribute to long-term positive development in the textile industry. For more information about H&M's social sustainability work in the supply chain, please visit hm.com/conscious. तो जी फ्रेंड्स, हो गई वीडियो एंड यार बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो थी। और ये जो ब्रांड है सबसे मतलब टॉप ब्रांड बांग्लादेश में ही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो और जैसा कि इसमें बताया कि सबसे ज़्यादा तो फीमेल वर्कर्स थी, और जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मतलब वो ज़्यादा गरीब शायद घर की थी, तो उन्होंने अपना मतलब वहाँ पर वो ट्रेनिंग भी दी जाती है उसी जो फैक्ट्री है, और वहीं पर ही ये सारे मतलब जो भी काम होते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जो फीमेल को ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उन्होंने जैसा बताया कि वो अपनी फैमिली को लेकर मतलब इतनी सैलरी अच्छी भी है कि वो अपनी फैमिली को अपने ही सैलरी से पाल रही हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है यार। और जैसा कि इसमें बताया कि उसमें उसी में ट्रेनिंग भी होती है, फिर ट्रेनिंग के बाद जॉब भी लग जाती है, और फिर उसके बाद मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा यार कि कपड़ों पर स्प्रे होता है। जिस तरीके से हो रहा था, अब इससे याद आ रहा है कि क्यों किसी में जो मतलब जो स्प्रे होता हो, जो पेंट होगा वो लोकल का होता है, जो पानी में डालते ही सब कलर उड़ जाता है। तो आई थिंक अब ऐसा समझ में आ रहा है कि स्प्रे होता है जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, जो जीन्स वगैरह पे है वो जल्दी नहीं निकलता, किसी में निकल जाती हैं। तो मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखी है। तो जिस तरीके से वहाँ पे काम चल रहा था कि जेब जो पॉकेट होती है उनकी कटिंग हो रही थी और बटन भी लग रहे थे, तो काफ़ी मैंने जितनी वीडियो देखी ना, ये बांग्लादेश की ही वीडियो से देख कर पता लगा है। नहीं तो कभी ऐसे ख्याल ही नहीं आए, और कभी ऐसा मतलब कभी दिखी नहीं वीडियो कि हाँ क्या चीज़ कैसे बनता है। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वीडियो देखकर, क्योंकि जो जिस तरीके से फ़ीमेल को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो मुझे तो सच में बहुत ही अच्छी लगी वीडियो। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हो, और भी किसी वीडियो पर अगर आपको रिएक्शन चाहिए तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।